Hello everyone. In my previous video, what we did was that we discussed trade discounts and cash discounts, and I told you guys that trade discounts are given at the time of sale and purchase. तो और हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री डिस्कस किया था जिसमें देयर वर 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड 4 ऑफ दीज आर टू रिकॉर्ड द परचेज सेल ऑफ इन्वेंट्री एंड रिटर्न्स ऑफ इन्वेंट्री. सो वेन एवर वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम यहाँ पे वील यूज़ दीज books of original entry. If we purchase goods for cash and if we sell goods for cash, that's goods or inventory. In that case, you need to write that in the cash book, because purchase on cash or sale on cash does not create a trade receivable or a trade payable. आपका trade receivable तब create होता है जब आप sell करते हैं on credit. ठीक है, on credit means कि आप किसी को उधार पे inventory sell कर रहे हैं, they pay you, they promise to pay you in future. So we discussed the sales journal. एंड ये वाली ट्रांजैक्शंस में से हमने जो है वो सेल्स जर्नल की ट्रांजैक्शंस की थी. इनमें से 3 वर द ट्रांजैक्शंस फॉर सेल्स जर्नल, एंड आई टोल्ड यू दैट वेन एवर ट्रेड डिस्काउंट्स आर गिवन, सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस ट्रेड डिस्काउंट. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जैसे यहाँ पे मिस्टर फरहान को हमने गुड सेल किए हैं और हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है. सो इन दिस केस हम हमेशा प्राइस को नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम सेल्स जर्नल में लिखेंगे. तो इस तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, हमने 1200 के गुड्स वर द लिस्ट प्राइस ऑफ दोज गुड्स. हाउ एवर मिस्टर फरहान को हमने 1020 के सेल किए. सो एंड सिमिलरली किरण को जो गुड्स सेल किए थे वो 300 की लिस्ट प्राइस थी, लेकिन हमने उसको भी 15% डिस्काउंट करके दिए थे, तो 255 की सेल किया. एंड अलिशबा को हमने जो गुड्स सेल किए, वी डिड नॉट गिव हर एनी ट्रेड डिस्काउंट, सो वी हैड जस्ट sold her the goods at the list price, so at $160. So the point to note here is that when we sell goods on credit and we give a trade discount, तो जब वो goods return आते हैं तो हमें उसके रिटर्न्स की वैल्यूज़ में भी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है, क्योंकि इनिशियली हमने फुल प्राइस पे सेल नहीं किए थे, हमने उसको लिस्ट प्राइस पे नहीं सेल किए थे, हमने उसको डिस्काउंट पे सेल किया था. तो इसलिए अब रिटर्न्स को भी रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड टू रिड्यूस द लिस्ट प्राइस बाय द ट्रेड डिस्काउंट. सो हियर इफ़ यू सी द ट्रांजैक्शंस, द सेल्स रिटर्न्स जर्नल की एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे है February 5 की, जिसमें मिस्टर फरहान इज़ रिटर्निंग अस गुड्स एंड विच हैड अ लिस्ट प्राइस ऑफ 200, बट we sold those goods for him at a discount of 15%. so basically जो list price 200 की, हमने उसको 200 के नहीं दिए थे, हमने उनको दिए थे 200 minus 15%. so on February 5, so we recorded like this, February 5 we need to record the date, then we write Mr. Farhan जो हमें goods वापस कर रहे हैं in the sales returns journal, and we'll write the amount here. so the amount here will be $170. ठीक है, the amount here, the dollar amount 170 is net of trade discount. ठीक है, similarly अलिशबा ने हमें गुड्स रिटर्न किए. सो इफ़ यू सी February 14 के दिन अलिशबा रिटर्न्स गुड्स टू अस, रिटर्न गुड्स टू अस ऑफ $50. इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि इस जर्नल में जाएगी. सही है, तो वी जस्ट हैव 2 ट्रांजैक्शंस फॉर सेल्स रिटर्न जर्नल. इफ़ यू सी वी हैड क्लासिफाइड दीज ट्रांजैक्शंस इनटू के कौन से जर्नल में जाएगी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो अलिशबा रिटर्न गुड्स टू अस ऑफ $50, तो हम यहाँ पे लिख देंगे February 14 and we'll write Alishba and we'll write $50 बिकॉज अलिशबा को तो हमने डिस्काउंट नहीं दिया था, तो इसलिए हम इसको लिस्ट प्राइस पे, इसके रिटर्न्स को भी हम लिस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे. तो यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल विल बी 230 and we'll transfer this total. so we'll transfer this total, so transfer to the sales returns account. So the benefit of making the books of prime entry is कि हम जो है वो हर रिटर्न को सेल्स रिटर्न के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम टोटल को लेके जाएंगे. सो इफ़ यू मेक दिस अकाउंट सेल्स रिटर्न्स अकाउंट,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे total of the sales returns journals, total of the sales returns journal, sorry for the short forms, but $230. तो इधर अगर आप $230 लिखेंगे, so it's like you have this benefit कि एक दफ़ा आपने सारे क्रेडिट कस्टमर्स के नाम लिख दिए in the sales return journal. Now you don't need to write the name of every other person, you just transfer the total to the sales returns account in the nominal ledger. So yes, लेकिन in the sales ledger where we have individual accounts of the trade receivables, वहाँ पे Mr. फरहान के account में you need to write the sales on the debit side, जो भी आप sales कर रहे हैं, and because Mr. Farhan is a trade receivable and assets have increased on the debit side, decreased on the credit side, तो हम Mr. Farhan के account में sales record करेंगे on the debit side, sales returns record करेंगे on the credit side. So if you see यहाँ पे क्या हो रहा है, double entry system किस तरह से चल रही है, sales returns खुद debit हो रहा है तो फरहान का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था जब फरहान का अकाउंट डेबिट हुआ था. ठीक है, सो here's how you do the sales returns journal. Then we record our purchases in the purchases returns journal और credit purchases जो भी हमने किए हों. तो मिस्टर कुमार से हमने credit purchases किए हैं, the first entry for the purchases journal, so we'll put that in the purchases journal. हम यहाँ पे February 3 लिखेंगे, February 3, and we'll write Mr. Kumar and we'll write the amount. So the amount was 800, but they gave us a discount of 10%, so we can't write 800 here, we'll have to write $720 because they have given us a discount of 10%. So Mr. Kumar ने हमें 10% का डिस्काउंट दिया है. Similarly February 12 के दिन हमने एक और ट्रांजैक्शन किए that goes in the purchases journal. So here purchase goods from Nadia, list price 1800 subject to a trade discount of 10%. तो हमने नादिया से goods खरीदे and the list price of it is 1800 and the discount that we are receiving here is 10%. So discount हमें कितना मिल रहा है, 10% of 1800 is 180. So when we subtract 180 from 1800 we get 1620. So we'll write Nadia here and we'll write 1620 के goods मिल रहे हैं हमको. So please note here that जो हम purchases कर रहे हैं वो हम मिस्टर कुमार के केस में हमें गुड्स पड़ रहे हैं 720 के, हम 720 के ख़रीद रहे हैं, एंड नादिया के केस में भी हम 1620 के ख़रीद रहे हैं. सो वी ऑलवेज रिकॉर्ड दोज प्राइसेस विच आर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, हमें कितने के पड़ रहे हैं. ठीक है, सो ऑन February 19 वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन with Mr. Saad, and Mr. Saad is also giving us a discount of 10%. So the goods that we are purchasing from Mr. Saad is 2050 के गुड्स ख़रीद रहे हैं हम. सो 3 ट्रांजैक्शन है टोटल परचेजेस जर्नी की, तो हम 2050 के गुड्स खरीद रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. सो वी राइट February 19 here and we write Mr. Saad and we write 1845. So 1840. So now the total is 4185 and we write transfer to the purchases account. So we write the purchases account. So you need to notice this here कि ये February 28 के दिन you will transfer to the purchases account. And notice here that जब हम nominal ledger में इसका account बनाएंगे, purchases को debit करेंगे इधर, and we'll just write the total of the purchase journal. So we say total of the purchases journal and I'll write 4185. So I'm writing short forms here, but it is recommended that the students shouldn't write the short forms in the exam unless they're in a hurry
और बिल्कुल जल्दी जल्दी में, बिल्कुल एंड में दे आर एक्चुअली दे डोंट हैव टाइम. In that case only you can use short forms, but ideally you shouldn't use short forms. Okay. And then we have transactions for purchases returns journal. So for example there is this transaction of on February 15 जो हमें purchases returns journal में record करनी है. We return goods to Mr. Kumar. So यहाँ पे आप देखें February 15 के दिन ये transaction है. We returned goods to Mr. Kumar which had a list price of 250. एंड बिकॉज दे हैड अ लिस्ट प्राइस ऑफ 250 और उसने हमें डिस्काउंट दिया था 10% का, तो इसका मतलब हमें परचेजेस रिटर्न्स के वक्त भी वी नीड टू रिकॉर्ड इट आफ्टर द डिस्काउंट. सो वील राइट February 15 एंड वील राइट Mr. Kumar and we'll write 225. So basically I have 250 ko I have reduced it by 10%. So I write here 250 multiplied by 10% and that is 25, and then I do 250 minus 25. या फिर फास्टर तरीका ये है कि आप 250 मल्टीप्लाइड बाय 90% करें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 225. सो बेसिकली 10% से रिड्यूस किया है हमने प्राइस को, बिकॉज हमें 10% से कम में मिले थे वो गुड्स. और तो अब जब हम रिटर्न करेंगे तो उसकी रिटर्न्स की वैल्यू भी 225 होगी, इट वोंट बी 250. So yes, on February, and then there is another returns on February 24. We returned goods to Mr. Saad, list price 350. So Mr. Saad was also giving us a discount of 10%. So again basically 350 multiplied by 90% will give me 315. Yes. और यहाँ मैं लिखूँगी February 24 and I'll write Mr. Saad and I will write 315. So the total of the purchases returns journal is 540, and I'll write here transfer to the purchases returns account. And I'll write February 28. So basically last day of the month. और यहाँ पे हम जो अगर अकाउंट बनाते हैं तो in the nominal ledger, so purchases returns. And because purchases is a debit, purchases returns is a credit. Purchases returns is opposite of purchases. उसमें हमारी इन्वेंट्री हमारी तरफ से जा रही होती है, तो we have to credit the purchase returns account. So I'll directly write total of the purchases returns journal, and this will be $540. So yes, in the CIE exam they can ask you to make a journal. ठीक है, कुछ questions में वो पहले first question के अंदर they might ask you for the first part to just make a purchases journal, and sometimes they merge it with cash book. So it's a very very scoring question. आपको easily 5-6 marks मिल जाते हैं वहाँ पे. Even in cash books are very easy. You should just know that आप डेट लिखते हैं, डेट्स डालते हैं करेक्टली, डिटेल्स डालते हैं, एंड द अमाउंट यू नीड टू रिड्यूस इट बाय द ट्रेड डिस्काउंट. एंड इफ देयर इज़ नो ट्रेड डिस्काउंट देन इट्स फाइन, आप लिस्ट प्राइस लिख दें. वरना अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको रिड्यूस करें, एंड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली प्राइस यू रिकॉर्ड इन द sales journal, in the sales returns journal, in the purchases journal, and in the purchases returns journal. So thank you. That's about it.